Every time you board a plane, you put your trust in the pilot. और हर बार जब पायलट कॉकपिट में पहुंचते हैं तो वो अपना ट्रस्ट पुट करते हैं इन द कंप्यूटर्स. आदमी और मशीन के बीच में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है ये, और जब ये रिलेशन ढंग से काम नहीं करता है तो डिजास्टर कैन स्ट्राइक एट एनी इंस्टेंट. We didn't know we were going to live or die. Autopilot! Life and death decisions have to be made in a moment. और जो confusion पैदा होता है, it can kill passengers and crew. Flying in today's world is a very complex task. The pilot's always the last line of defense. और when the worst happens, the question is, who is flying the plane? सुबह के 8 बजे से कुछ ज्यादा का टाइम हुआ है इन स्टैनफोर्ड, फ्लोरिडा. These student pilots walk out to ground school और उनका आज का टॉपिक है SLS SR-20. This is one of the newer models. We can tell just from looking at it because of the lights on the wingtips called recognition lights or recog. हर साल कितने दर्जन स्टूडेंट्स एनरोल एट द डेल्टा कनेक्शन एकेडमी. ये आशा करते हैं वो जब यहाँ ज्वाइन करते हैं इस इंस्टीट्यूट में कि वो भी किसी दिन बड़े पायलट बनेंगे और बड़ी बड़ी एयरलाइंस में जहाज उड़ाएंगे. और एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी जान और उनके पैसेंजर्स की जान उन्हीं के ऊपर निर्धारित होगी. कितना वो डीप अंडरस्टैंडिंग अपने एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे, उसी पे सब कुछ दारोमदार होगा. From this side, right here, you can see the propeller governor. The majority of our students come to us with zero or very little flight time. We want to run someone through our entire program and end up placing them with one of the regional carriers. The wingtips here are called Horner wingtips. They help to reduce the induced drag. Here's a ये जो फ्लाइट स्टूडेंट्स हैं, they start with smaller aircraft in the beginning. और जैसे समय पार होता रहेगा ये लोग जो है लार्जर कमर्शियल जेट्स में पहुंच जाएंगे with which boasts of newest technology. When you go back to the Wright brothers, they had no automation and everything was by muscle power other than a small internal combustion engine. Everything that they did when they moved the wings, the elevators and the rudders, they did manually. But in the last 100 years, the technology has revolutionized the flying. Pilot जो है अपना cockpit share करते हैं with automated systems which control especially all the aspects of a flight. It can do everything now up to and including land the airplane. Everything is set so that the autopilots and automation systems are tools for the pilot to use, but they're not a replacement. It's a critical lesson for students pilot to learn. Safe flight is a balance between automation and training. अगर कोई पायलट गलती करता है या ये मशीन्स कोई मैन फंक्शन हो जाती है इंस्ट्रूमेंट्स का, so these machines can turn into lethal weapons which cannot be controlled. Lima, Peru, October the 2nd, 1996. Aero Peru की flight 603 is getting ready to take off for Santiago, Chile. The plane is a 4-year-old Boeing 757, a sophisticated aircraft known for its reliability and safety. जो 757 है, it is flown by two of the most experienced pilots of this Aero Peru, Captain Eric Shriver and First Officer David Fernandez. प्लेन पे सवार हैं 61 यात्री और 9 क्रू मेंबर्स. जो जेट है वो एक नया जेट है इन द रेंज ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट्स. ये ऐसा जेट है जिसमें कि पायलट्स को ट्रेन किया जाता है टू रिलाई ऑन सेंट्रल डाटा यूनिट, जिससे कि गलतियां कम हो सके, बोथ मैकेनिकल एंड ह्यूमन. लेकिन आज रात को मिनट्स आफ्टर द टेक ऑफ द फ्लाइट बिकम्स
terribly wrong. The altimeters are stuck. जो अल्टीमीटर होता है वो इंडिकेट करता है कि जमीन से प्लेन कितनी ऊंचाई की ऊंचाई पे उड़ रहा है. इनका अल्टीमीटर जो है वो 0 रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन प्लेन जो है वाकई में हवा में उड़ रहा है. This is really new. Keep V2 plus 10. ये जो 757 एयरक्राफ्ट है इसमें 3 अल्टीमीटर लगे हैं, एक पायलट के लिए, एक को पायलट के लिए और एक बैकअप के लिए. लेकिन इस स्थिति में तीनों की तीनों ही ऐसा लग रहा है कि वो डेड हो गए हैं. अब जबकि पायलट और को पायलट दोनों इंसान जो है पहली सिचुएशन से पार नहीं पा रहे थे, वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, तभी दे लूज अनदर क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट और वो था एयर स्पीड इंडिकेटर. The speed. Eh? The speed. What's going on? We're not climbing. No, I am climbing, but the speed. Hold it. Maintain speed. और जबकि इनको इतनी वार्निंग्स मिल रही थी, कैप्टन श्राइवर जो है he decides to land his plane. Lima Tower, Aero Peru 603. We are in an emergency. Aero Peru 603, Lima. We are declaring an emergency. We have no basic instruments, no altimeter, no airspeed indicator. Declaring emergency. और इस सारे कंफ्यूजन में जो बात और ऐड करती है कि ये दोनों जो है रात के टाइम उड़ रहे हैं और पानी के ऊपर उड़ रहे हैं, जिसमें कि कोई इनको विजुअल रेफरेंस पॉइंट नहीं मिल रहा है. The airplane was controllable, but you first have to diagnose what's wrong, and it's very easy from 20/20 hindsight, sitting here in a chair on a nice sunny day, to say this is what he should have done. But in the cold, dark night, with bells and whistles going off, it's very difficult to analyze conflicting information that you're getting. And not being able to trust their instruments, the pilots are flying blind. क्योंकि ये दोनों अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, अब इन दोनों को ग्राउंड से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसी पे आधारित रहना पड़ेगा. Can you give us the airspeed, please, if you have us on the radar? Yes, affirmative. As of 10 seconds, it seems that you're climbing at level 6,000 at 22 miles south on heading 195. Okay, we have that. We are on heading 190, and we have 7,000 feet on the altimeter. Yes, correct. You are now reaching 7,000. And even as they try to return back to the airport, the havoc in the cockpit becomes more. अब उनको ऐसी वार्निंग मिलने लगी है कि वो ओवर स्पीड कर रहे हैं. Overspeed. यानी कि वो बहुत तेज उड़ रहे हैं. extend the speed brakes. And now the stall warning sounds. और उसके बाद What's happening? Too low terrain. We have the terrain alarm. We have the terrain alarm. the ground proximity alarm tells them that they are flying too low. The crew is bombarded with conflicting warnings. और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस वार्निंग पे बिलीव करें. At a flight level of 10,000 over the sea. There is no checklist for if you have these 7 or 8 warnings going off, which they did, and they couldn't shut them off. Altitude is 9,700. 9,700? Yes, correct. Do you have any visual reference? 9,700! But it is indicating too low terrain. Are you sure you have us on the radar at 50 miles? Hey, look! And suddenly they realize the horrible truth. We're gonna turn over! Aero Peru 603, Lima. They are flying just meters above the water. Flight 603 के हादसे में कोई भी बचा नहीं है. और ये इस कारण से हुआ कि किसी तरह से जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स थे वो किसी तरह हेवाय हो गए. इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनको इस पैसिफिक वाटर में ढूंढते हुए फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स मिल गए थे.
It was clear to us that they were really experiencing a problem with airspeed and altitude. 757 पे दोस्तों pitot-static tubes ऐसे डिवाइस होते हैं which measure the altitude and the airspeed. ये छोटे से exterior sensors होते हैं जो relay करते हैं information to the plane's computerized systems. Deep inside the water, a tape is discovered covering these sensors. वो tape किस तरह वहाँ पहुँची? It leads the investigators back to the maintenance crew at the Lima airport. मेंटेनेंस वर्कर्स ने इस जेट को साफ किया था जबकि प्लेन जो है लीमा एयरपोर्ट से उड़ने से पहले. A worker had put these tapes on the static tubes to protect them. ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन जब मेंटेनेंस वर्क पूरा हुआ तो वो वर्कर ने जो था प्लेन रिमूव करना भूल गया. वो It was a small oversight with tragic results. The inspector who was supposed to quality check his work did not do it, and the supervisor out on the line that night was not there. He was sick, and there was a regular mechanic who was filling that role. He did not see it. In this case, the captain did the pre-flight. They do a walk around looking for just that kind of thing. The captain did the pre-flight that night, and he did not detect it either. Yes, correct. You are now reaching 7,000. जो ब्लॉक ट्यूब से उससे ये बात भी सामने आती है कि जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट्स को बताया था कि वो 7,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं. प्लेन कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इट इज नॉट कैलकुलेटेड बाय द रेडार्स ऑन द ग्राउंड, बट इट इज कैलकुलेटेड बाय द प्लेन्स ओन सिस्टम्स ऑन बोर्ड. Your distance is 7,000 फीट की ऊंचाई के बाद प्लेन जो है धीरे धीरे डिसेंड करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो ऑन बोर्ड सिस्टम से दे कुड नॉट डिटेक्ट इट. जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उसको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो एल्टीट्यूड उसके सिस्टम में दिखाई दे रहा है वो गलत एल्टीट्यूड है प्लेन का. North 360. Blind sight by the planes, conflicting readings which they were given, which they were getting, the pilots were at total lost. Aero Peru. उनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो किधर उड़ रहे हैं, कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं और कितनी तेज उड़ रहे हैं. We're hitting water! Pull it up! Climb Aero Peru 603. If you need to, pull up. एरो पेरू का जो हादसा था वो एक एग्जाम्पल बन गया था कि पायलट्स जो हैं किस तरह निर्धारित हो चुके हैं अपने ऑटोमेटेड सिस्टम्स के ऊपर, एंड हाउ हेल्पलेस दे कैन बी व्हेन द सिस्टम्स आर क्रिपल्ड. जो स्टूडेंट पायलट्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि क्या कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है विच इज देयर एट द हार्ट ऑफ देयर प्लेन, और जब कोई चीज गलत हो जाती है तो उनको ये पता होना चाहिए कि उस समय कौन कंट्रोल पे था, क्योंकि एक एक्सपीरियंस पायलट भी he can rely on his automated systems, और जब वो करता है तो disasters can just be at moments away. All right, gentlemen, what we're going to do today is practice rejected takeoffs in preparation for the V1 cuts. It'll be engine fire, engine failure, or loss of directional control. At the Delta Connections Flight School at Stanford, Florida, student pilots are facing the worst in the safety of the stimulator. कोई भी पायलट इस स्कूल से ग्रेजुएट नहीं होता है जबकि वो ऐसी प्रॉब्लम्स ना फेस कर सके जो कि शायद उन्हें रियल वर्ल्ड में कभी ना देखने को मिले, लेकिन उनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है यहाँ पे. The course that I teach, they work as a crew. They'll get 26 hours in the simulator, 13 hours in each seat. Simulation can now introduce problems that are hard to introduce in the air. Doing it with simulation allows it to be repeated, and then if you are ever faced with the emergency, it becomes almost a matter of routine. All right, connection 500, you're clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 4, connection 500. टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड के बाद ही the students are faced with an emergency. And we got a left engine oil pressure. When you get one of those warnings, don't just punch it out. Go ahead and acknowledge it so both pilots are in the loop. You're both on the same page. All right.
They are left engine oil pressure. I'll take flight controls radios. You probably I have the flight controls. और ये बार बार ड्रिल उस ड्रिल से होके गुजरते हैं because surviving in the air depends on getting it right in the simulator. क्योंकि एक्चुअल कॉकपिट में एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ी बात बदल सकती है और फिर उसके बाद it becomes a test of survival for saving their planes and the passengers. 19 फरवरी 1985 चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट 006 is tumbling through the sky. No response, Captain! Airspeed 18 knots and falling. इस स्थिति में एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया है. No response. Their instruments seem to be making no sense. People just popped up like popcorn, hitting the cabin. We didn't know we were going to live or die. जो Boeing 747 jet था, it falls through more than 10 kilometers in just 2 minutes. Pilots can barely keep it airborne. You know, this airplane is totally out of control. It is going to crash. The jet nosedives towards the Pacific Ocean. Then, just moments before the impact, the crew takes the control of this plane. Oakland Center, Dynasty 006. We're declaring an emergency. Dynasty 006, Oakland Center, you are now cleared. You are free to descend at pilot's discretion. After surviving a tremendous fall, Captain Moon Yoo-ho makes a classic safe landing. I thought he was a hero. He saved our life. And we thought he was a hero and everything was fine. 24 passengers have suffered minor injury. One crew member is hospitalized and soon released. But the 747 looks like it has been through a war zone. Parts of the entire tailplane at the end were ripped off as though a tornado had come through or a crane had been in and ripped pieces out of it. Investigators इस बात का जल्दी से पता लगा देते हैं कि the damage to the plane was not the cause of its problems, but had actually occurred when the plane was taking those dramatic plunge. वो लोग जो है मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और फ्लाइट लॉग्स में को टेस्ट करते, कोई स्टडी करते हैं जिससे कि पता लगाया जा सके कि ये सब किस कारण से हुआ था. Inside the plane, the investigators find a worn valve. It leads directly to the failure of the jet's fourth engine. लेकिन ये कारण नहीं था कि जिसकी वजह से प्लेन इतनी जबरदस्त तरीके से डाइव करी थी. Engine 4 flamed out. The loss of thrust on a 4-engine airplane is a minor event. It's an event, you have to take care of it, but the airplane will fly on 3 engines with no difficulty. I do not think I was fatigued. कैप्टन जो है इन्वेस्टिगेटर्स को बताते हैं कि जब उनका वो और उनका क्रू जो है फॉल्टी इंजन से के साथ लगे हुए थे, तब जो था उन्होंने ऑटो पायलट को कंप्यूटर के कंट्रोल में डाल दिया था. और लेकिन इस 747 में जो ऑटो पायलट था, it does not control the rudder. Auto pilots are meant to sustain stable flight. If something goes wrong, the system tries to respond. With more engine power on the left side, the China Airlines की फ्लाइट सीधे हाथ की तरफ मुड़ने लग जाती है. जो ऑटो पायलट था वो अब रिएक्ट करता है by controlling the ailerons of the plane so that it remains flying straight. But the ailerons were not up to the job, and the jet kept turning. In order to keep it from turning to the right, the proper thing to do would have been to step on the rudder. Now, it's possible that he'd forgotten that the autopilot didn't use the rudder. He may have been assuming all along that the autopilot was just flying the airplane the way a human being would have, which it wasn't. Focusing on the malfunctioning engine, Captain Ho जो थे उन्होंने autopilot को ही रखा प्लेन के कंट्रोल करने के लिए. But without the rudder, the ailerons were losing their battle to keep the plane steadily in the air. Gentle turn got steeper.
The airplane started to lose speed, and in the end, it was really that little error of airmanship, the failure to step on that left rudder pedal, that triggered everything else. We're banking right, Captain. Airspeed 230. Facing with mounting problems, the captain finally takes control of his aircraft. We're banking right, Captain. I'm disengaging autopilot. When the autopilot snaps off, his situation becomes more troublesome. Without the ailerons to control the plane's bank, it finally tips over. It plunges through thick clouds and Captain Ho is not able to maintain his bearings. The crew has no visual reference point. They have no idea which way is up. They are totally dependent on their attitude indicators. और उन्हें ऐसा लगता है कि वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं. I've lost ADI. The ADIs have malfunctioned. It's going out of limits. लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स जो है malfunction नहीं हुए थे. They told the crew an important truth that they were falling towards the Pacific Ocean. They simply didn't believe what they were seeing, and they thought they had lost their attitude instruments. They hadn't lost their attitude instruments. The airplane was in fact embarking on an aerobatic maneuver. You can see the stewardesses, all these people who didn't have their seatbelt on, they were flying. और जब फाइनली प्लेन उस बादलों से बाहर आ जाता है, उसके बाद ही कैप्टन हो जो है अपने प्लेन को कंट्रोल में कर पाते हैं. Because he now has a visual reference. I can see the horizon. By the time Captain Ho takes full control of his plane, it was too late. It was almost too late. ये जो near fatal dive हुई थी, उस बात से ये बात साबित होती है कि पायलट्स को अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए. लेकिन जो भी गलती इस फ्लाइट क्रू ने करी थी, लेकिन वो अपने अल्टीमेट टास्क में बहुत सक्सेसफुल होते हैं. स्टूडेंट पायलट्स जो है ऐसी इमरजेंसी बार बार फेस करते हैं, जिससे कि अगर असलियत में उनके सामने ऐसी कोई डिजास्टर आए तो वो पूरी तरह उसको ठीक कर सके. ऑटोमेशन इज एन एनॉर्मस एड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स. So what automation has done, in a sense, is taken pilots and taken them from being hands-on kind of controllers of the machine to monitorers of what the automation is doing to the machine. You really are just sitting there with your arms folded, and this goes on for hour after hour after hour, and understandably, people become stupefied. लेकिन पायलट अगर अपने प्लेन को अच्छी तरह नहीं समझते तो वो जल्दी ही ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां से उनका बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा. The one big thing they did right is they saved the airplane. And in principle, that's all you ever need to do right. You need to save the airplane and you need to save the passengers. And that's what they did. Autopilot engaged. Autopilot engaged. चाइना एयरलाइंस इंसिडेंट के तकरीबन 10 साल बाद एक और फ्लाइट क्रू is baffled by the sophisticated autopilot and do not take control of the plane until it is too late. March 1994, Siberia. Investigators जो हैं wreckage में ढूंढ रहे हैं of the Russian International Flight 593. जो 75 लोग इस प्लेन में सवार थे, वो उनकी सबकी मौत हो गई है. The plane was the newest plane in its fleet, a European-made Airbus 310. कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डर की आवाज सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स शॉक हो जाते हैं जो वो सुनते हैं. उसके बाद कॉकपिट में से उनको बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं. वो इन्वेस्टिगेटर्स एकदम स्टन्ड रह जाते हैं जब वो सुनते हैं कि these children had operated the flight controls. जो लड़का और लड़की थे वो बच्चे थे of the pilot in command, Captain Yarlov
Krivinsky. Investigators began to piece together an almost unbelievable story. मार्च 22, 1994 की शाम की एक घटना. Flight 593 begins its 10-hour journey to Hong Kong. Several hours into the flight, the jet is cruising on autopilot. On board are two children taking their first international flight. Jana and Elda Krivinsky, a family friend and a fellow pilot, brings these children into the cockpit to see their father. This is First Officer Igor Vladimirovich Piskarev. Hello. ये एक डेडली चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत थी. Think of our new airplane. That's very nice. It's amazing. फ्लाइट 593 है तकरीबन 2000 मील पूर्व दिशा में मॉस्को से इन द मिडल ऑफ साइबेरिया. उनको आशा है कि ऑटो पायलट प्लेन चला रहा है, तो कैप्टन जो है वो अपने बच्चों को पायलट की सीट पे बैठने देते हैं एंड फ्लाइट कंट्रोल्स को वो हैंडल कर सकते हैं. चाइना एयरलाइंस के 747 की unlike the China Airlines 747, this sophisticated autopilot सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है इस प्लेन के, इंक्लूडिंग द रडर. Elda's small pressure on the controls switches off part of the autopilot. Elder is manually controlling the jet's ailerons. Imperceptibly at first, the plane begins to bank. Set the horizon. कॉकपिट में कोई भी इस ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन को भांप नहीं पाता है और कुछ करते नहीं है वो लोग. जो प्लेन का डिजाइन है वो इस तरह को बचा पाता है कि प्लेन इज ऑन द डिजास्टर. इस बात की भनक नहीं लगने देता है किसी को. Yes, it is. Another peculiarity of the plane is that it has no alarm signaling the disengaging of the autopilot in the list channel. While our Russian planes have an alarm sounding in such an event. प्लेन के जो बाकी फंक्शंस हैं उनको ऑटो पायलट अभी भी कंट्रोल कर रहा है. Only the ailerons are in Elda's hands. But it's enough to affect the plane's flight. कुछ सेकंड के बाद ही एयरबस जो है इट इज बैंकिंग एट 45 डिग्रीज. द फोर्स ऑफ द टर्न पुशेस एवरीवन इन देयर सीट्स. Guys! The increased G-force makes it difficult to reach the controls. Hold it. Call the control column. Elda is the only one with both hands on the controls. और जो प्लेन की स्पीड है वो भी उनको pushing him back into the seat. The other way. Turning to the left. I am trying to get left. Okay, get out. Elda can't leave. His body feels twice his weight. Or suddenly an alarm sounds. The autopilot is shutting down. जब प्लेन इस डेंजरस पोजीशन में चला जाता है तो ऑटो पायलट को इस तरह से डिजाइन करा गया है कि वो एकदम शट ऑफ हो जाए. ये एक सेफ्टी फीचर है टू पुट द पायलट बैक इन इट्स फुल कंट्रोल. और इस सिचुएशन में अ बच्चा इज सिटिंग एट द कैप्टन सीट. प्लेन जो है जमीन की तरफ डाइव करना शुरू कर देता है. प्लेन जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड से जमीन की तरफ डाइव करना शुरू कर देता है और वो स्पीड है तकरीबन 200 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. पैसेंजर्स के लिए ऐसा लग रहा है कि वो एक एलिवेटर में है जिसके नीचे का तल हट गया है और वो एलिवेटर एकदम नीचे की तरफ गिर रही है. कैप्टन क्रिविंस्की फाइट्स हिज वे टुवर्ड्स द कैप्टन सीट, लेकिन वो फ्लाइट 593 को बचाने के लिए बहुत लेट हो चुकी है. और जैसा कि चाइना एयरलाइंस के प्लेन के साथ भी हुआ था तकरीबन 10 साल पहले, द पायलट्स ऑफ दिस रशियन प्लेन आर कंफ्यूज्ड बाय देयर ऑटोमेशन. और इस केस में वो अपने प्लेन के ऊपर कंट्रोल नहीं स्थापित कर पाते हैं अनलेस इट इज टू लेट. ये जो डिजास्टर हुआ था ये ऑटोमेशन से शुरुआत नहीं हुई थी बट अ सिंपल डिसीजन मेड बाय द एक्सपीरियंस्ड पायलट. उस वजह से ये शुरू हुआ. I've never heard of anything like that before or since.
It was very unprofessional on the part of the captain. The first officer also bears some responsibility for not raising major objections immediately. To allow someone unqualified to sit in the seat of a commercial airliner is unthinkable. जो क्रू थी उनकी मिस्टेक जो थी it was compounded as they did not fully understand the automation of the plane. We've gone into a zone, a holding pattern. इस इंसिडेंट के 10 साल बाद एक और पायलट जो है he gets confused with this automation system. पर इसमें भी जिनकी सिचुएशन थी वो और कॉम्प्लिकेटेड बन गई थी by the common sense, complicated बन गई थी by a common sensation which the pilots are trained to ignore. पॉल मोरो जो है एक इंस्ट्रक्टर है एट द डेल्टा कनेक्शन एकेडमी इन फ्लोरिडा. उनका काम है कि टू गेट द स्टूडेंट्स इनटू unfamiliar, complicated situations and then to land their jet safely. Upset recovery is where we take a student or any pilot and we try to get them the ability to recover their aircraft from an unusual attitude or an upset, such as wake turbulence, wind shear, unintentional stall. We're going to do a low-level pass and bring right down to the edge of the runway, and then just about halfway down we're going to break up and demonstrate how quickly we can get the aircraft into a nose-high situation. At that point we're experiencing, in that first portion of the pull-up, we're experiencing the max G-load in that turn. We're hitting just about 6.5 Gs for that pull. 6 Gs, you're experiencing 6 times your body weight. I weigh 200 pounds, so 6 times that. At that point I feel like I weigh 1,200 pounds to my body. It feels like I'm being squeezed completely all over my entire body. It feels like your face is kind of peeling down over you, and it's just once you get used to it, it's kind of fun. In a tightly controlled situation with the instructor and in its next seat, a student pilot learns to compete with intense physical situations which can disorient and confuse him. Pilot has to overcome these sensations and also ignore them. Trusting what your body tells you, it can get disastrous results. 3 जनवरी 2004 फ्लैश एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो है it is preparing to depart a popular tourist destination which is Sharm el-Sheikh in Egypt. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Kadir and his entire crew, we welcome you on board Flash Airlines Boeing 737-300. 148 लोग उस प्लेन में सवार हैं. कैप्टन जो है 53 साल के कादिर अब्दुल्ला हैं और वो पहले इजिप्शियन एयरफोर्स में भी कार्यरत रह चुके हैं. उनके पास तकरीबन 7,000 से ज्यादा घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है. सुबह होने से थोड़ा समय पहले कैप्टन कादिर और उनका क्रू जो है एक परफेक्ट टेक ऑफ करता है इस एयरपोर्ट से. उन्होंने अपने प्लेन का ऑटो पायलट एंगेज नहीं करा है और वो मैनुअली ही फ्लाई कर रहे हैं अभी. While still climbing, the flight plan is already begun to come apart. दिन के निकलने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को ये कोई भी सर्वाइवर नहीं मिलता है और this horrific crash. The plane had just taken off and it looked very strange why this accident happened so quickly after takeoff. फ्रेंच और अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं इजिप्शियन अथॉरिटीज के टू इन्वेस्टिगेट दिस क्रैश और उनको 2 हफ्ते का टाइम लगता है टू लोकेट द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड द फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. इन्वेस्टिगेटर्स जो है कई सारी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड करती हैं इस क्रैश के बारे में और उनको ऐसा भी लगता है कि हो सकता है वर्टिगो की वजह से ये क्रैश हुआ हो. Vertigo is a physiological condition and it's based on the inner ear. Over a dark ocean, without a defined visual horizon, no ground lights, the pilot may not be able to perceive visually whether he was flying up, down, left, or right. And if the fluid in his inner ear was moving or he tilted his head, that may induce a sensation, a physiological sensation, that may cause the pilot to believe the airplane is flying straight and level when it's actually turning. Roger, when ready, inshallah. Left turn to establish 306, Sharm VOR. As the plane banked over the Red Sea, it slowly began to go off course. और पायलट कुछ भी नहीं बोलते हैं इस सिचुएशन में और ऐसा लग रहा है कि he is unaware about the changes being made in his
flight path. It is actually a very high workload situation, and when there are no visual cues outside because it's a moonless night and you're over featureless territory with no lights in it, you really, as a professional pilot, should be totally aware of the fact that this is a situation in which you could get disorientated. Precisely what the captain perceived is not known, and what is known is his control wheel slowly inched towards the right. Turning right, sir. What? Aircraft is turning right. How turning right? In this particular instance, not only are you trying to fly the airplane and understand situationally what's happening, but you're going through the mental gymnastics because your expectations are one way. Meanwhile, you have a first officer who's telling him something that's totally different. जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन उन्हें मिल रही थी अपने प्लेन के बारे में, इन्वेस्टिगेटर्स ने ऐसी बात जानी कि कैप्टन कादिर ने जो है अपने प्लेन का कंट्रोल ऑलमोस्ट ले लिया था मैनुअली. It is interesting that the recovery starts as the airplane turns towards the coastline. The lights on the shore would have given the pilots a clear and unmistakable view of the aircraft's attitude. This is the moment that the disorientation disappears, and this is the moment that the recovery begins. Sadly, there isn't enough time to save the aircraft. लेकिन वो बात जो सामने आती है वो ये थी कि कैप्टन कादिर के पास सारी इंफॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए थी अपने प्लेन को बचाने के लिए वो उनके सामने ही थी. The thing that is important when you're experiencing spatial disorientation or vertigo is to put absolute implicit trust in your instruments, that they are telling you the truth, and that whatever your sensation is a limitation of human beings. Trust the instruments. ये एक ऐसी सिचुएशन है which is hammered daily at the Delta Connection Academy. ब्रायन प्रतीशा जो है वो एक स्टूडेंट है यहाँ पे जो कि इवेंचुअली एक ना एक दिन कमर्शियल प्लेन्स को उड़ाना चाहते हैं, और उनके साथ ये जो ख्वाब है वो कई स्टूडेंट्स शेयर करते हैं, और ये एक ऐसा गोल है जो कि अभी कई साल दूर है. It should take me between 5 to 6 years at a regional airline before I move on to the major airlines. ये एक टिपिकल जर्नी है. सीनियर क्रू मेंबर्स जो होते हैं ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनके पास कई हजारों घंटों का एक्सपीरियंस होता है उड़ने का उनके अंडर देयर बेल्ट, लेकिन सब ने जो है शुरुआत करी थी विद नन. There's a very old saying, is as soon as you feel like you're no longer learning with aviation, get out of it, because it's going to hurt you. Training is ongoing. Recurrent training is an integral part of safe flying. The reason we have the safe level of flight that we do today is in very large part because of the adequacy and completeness of the training. Relying on your instruments and trusting your automation is one of the most fundamental lessons of flight training. Insert the ignition key, clear the propeller area, and then start the engine. छोटे प्लेन्स और जंबो जेट्स से लेकर जंबो जेट्स तक जितनी भी सेफ फ्लाइंग होती है, इट डिपेंड्स ऑन पायलट्स एंड प्लेन वर्किंग टुगेदर. और अगर ऐसी सिचुएशन भी आ जाए जबकि टेक्नोलॉजी ऑफ दिस जंबो जेट्स बिकम्स क्रिटिकल, तो जो मॉडर्न जेट्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि पायलट्स फिर भी अपने प्लेन को सेफली जमीन पे उतार सके. अगस्त 24, 2001 एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 306 इज कैरिंग 300. एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 जो है 306 पैसेंजर और क्रू को लेके उड़ रही है. ये जहाज जो है पोर्चुगल जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस ट्रबल में है फ्लाइंग ओवर द अटलांटिक ओशन. You could literally hear a pin drop. The exterior, there was no sound in that plane, in that cabin at all. जो एयरप्लेन है इतना साइलेंट है because it has run out of fuel. A state-of-the-art jet is now a very heavy glider. Functions we've lost. We have no more stabilizer and yellow hydraulic. No ADR 2 and 3. No anti-skid. No reverse. वो टेक्नोलॉजी जो कि प्लेन को उड़ने के लिए सहायक होती है, it has now deserted this crew.
प्लेन जो है तकरीबन 10 किलोमीटर ऊंचाई में है आसमान में, एंड इट इज विदाउट द मोस्ट एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। जो कैप्टन है और को पायलट जो है उनको अब कोई और ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि प्लेन जो है जमीन पे सही सलामत तरीके से उतारा जा सके। ये जो फ्लाइट है जो कि जा रही है कनाडा से पोर्चुगल तक, उसके पहले 4 घंटे जो थे उड़ने में वो बहुत ही रिमार्केबल रहे हैं। We're getting to our next checkpoint. अटलांटिक के ऊपर हर 30 मिनट के इंटरवल के बाद क्रू ने जो है चेक करी थी अपनी पोजीशन और फ्यूल कंज्यूम अगेंस्ट देयर फ्लाइट प्लान। 2 tons on the right, 11.2 tons on the left. और क्योंकि कंप्यूटर भी लगे हुए हैं लेकिन कुछ प्रोसीजर्स जो है दे आर डन बाय हैंड, और उनमें से एक है टू चेक द फ्यूल लेवल। Fuel check complete. Levels normal for the distance flown. But then a small alarm breaks the air of routine in the cockpit. Look, we're getting a warning signal. Oil temp low and oil pressure high on number 2. और अब जो है पता लगता है कि ऑयल टेम्परेचर इन टैंक नंबर 2 इज लेस, और ये भी बात दर्शाता है कि जो ऑयल प्रेशर है इट इज हाई। Look at the QR8 for more information. A low oil temperature indication is normally indicative of bad readings and bad sensor. Oil temperatures don't decrease normally, they increase. A low oil temperature would be of no concern. The high oil pressure is a very strange indication. It's very rare. In fact, I've never actually heard of one. जो ऑयल रीडिंग्स आ रही थी वो इतनी गलत आ रही थी कि पायलट्स को ऐसा लगा कि बिकॉज ये किसी कंप्यूटर एरर की वजह से ऐसी अनयूजुअल रीडिंग्स आ रही हैं। But captain and the first pilot keep monitoring these oil levels. पहले अलार्म के 30 मिनट के बाद एक और अलार्म सुनाई देता है on the cockpit of the Airbus. Fuel imbalance warning. Haven't seen that before. Follow all we can action. I have air traffic control. Most of the fuel on this Airbus 330 is contained in large tanks on the wings. और ये बात पता लगी थी कि the fuel level on the right is extremely low as compared to the fuel level on the left. Looking it up in the... जो फ्लाइट मैनुअल है उसके मुताबिक फ्यूल को ट्रांसफर करना चाहिए from one side to the other using the cross feed valve. और तब क्या होगा कि फ्यूल जो है एक टैंक से दूसरे टैंक में चला जाएगा। Once you begin a cross-feeding procedure to correct a fuel imbalance, restorative action should commence quite quickly. In other words, the situation would not continue to get worse. Even though when the crew is following proper procedures, the situation gets even worse. Fuel quantity isn't rising in the tanks for the right wing. Check fuel quantity. It's very low. Hold on. It's much less fuel than we should have. It looks like a fuel leak. Check again. The systems monitor hundreds and hundreds of sensors, and they can be affected by such mundane things as a little bit of frost or ice on a sensor can cause it to present bad data. लेकिन इस सिचुएशन में द रीडिंग जो थी बिल्कुल एक्यूरेट थी। एक टैंक में वाकई में ही लीक था। अब जो कैप्टन है वो ट्रांसफर कर रहे हैं द मोस्ट प्रेशियस फ्यूल फ्रॉम वन टैंक टू द अदर, और जिसमें वो ट्रांसफर कर रहे हैं वही टैंक लीक कर रहा है। और ये बात कंफर्म हो जाती है व्हेन द को पायलट जो है एक और फ्यूल चेक के बाद रीडिंग चेक करते हैं। तो According to all the gauges, all the tanks in the right wing are way below the level they should be according to the flight plan, and there's hardly anything in the other ones. What about the trim tank? There's nothing there either. With every passing second, the leak drains off the fuel, or finally the jet is running on empty. We're losing engine number 2. I don't believe this. Okay, maximum thrust on number 1.
What's going on? Yes. Try to transfer fuel from center tank into trim tank. Transferring. Fuel quantities reaching 0. This can't be. I'm not gonna go completely dry on this airplane. लेकिन जो एयर ट्रांजिट की ये फ्लाइट है, इट हैज रन आउट ऑफ फ्यूल और वो तकरीबन 12,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रही है ओवर द अटलांटिक ओशन। और नो फ्यूल का मतलब होता है नो पावर टू कंट्रोल द प्लेन। बट द जेट हैज वन लास्ट ट्रिक अप हिज स्लीव्स, वन लास्ट सोर्स ऑफ पावर। क्रू जो है बैकअप सिस्टम जो कि बहुत कम यूज में लाया जाता है, उसको डिप्लॉय करते हैं। It's called a ram air turbine. It will deploy from underneath the fuselage near the wing fairing, and it's a small propeller that deploys out the bottom of the fuselage and it spins in the wind. And that small propeller will provide very limited electrical and hydraulic systems to run the aircraft. In other words, although it's a glider, at least it's a controllable glider. When it took off, this jet was the state-of-the-art marvel. लेकिन अब वो आसमान से नीचे गिर रहा है और क्रू को ये आशा रखनी होगी कि जो लास्ट बिट ऑफ टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, it will bring down the plane in one piece on the ground. एयर ट्रांजिट की फ्लाइट हैज रन आउट ऑफ फ्यूल और जो ये प्लेन है अब एक बहुत ही बड़ा ग्लाइडर बन गया है और उसमें 300 से ज्यादा लोग सवार हैं। प्लेन जो है, जो उसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन थी पोर्चुगल में, वहां से डाइवर्ट कर लिया गया है और अब वो बढ़ रहा है एक मिलिट्री बेस की तरफ, जो कि एजियर्स में है वो मिलिट्री बेस। I saw flight attendants with life jackets in their hand running down the aisles. And obviously that was a sign of fear. What was happening was the first question that popped in my mind. और अगर कैप्टन जो है वो एयर बेस की तरफ नहीं पहुंच पाते तो उनका दूसरा ऑप्शन है, वो है खुद समुद्र पे उतरना। कैप्टन पीछे जो है वो रिस्क नहीं करना चाहते क्योंकि प्लेन जो है इस तरह डिजाइन नहीं किए जाते कि वो समुद्र पे उतर सके। 1996 में एक बोइंग 767 ran out of fuel off the coast of East Africa और उसके जो लास्ट मोमेंट्स थे वो पकड़े गए थे ऑन एन एमेच्योर वीडियो। और उस केस में जो इथोपियन एयरवेज का जो जेट था जिसमें कि 175 लोग सवार थे, उसमें से सिर्फ 50 ही उस हादसे में बच पाए थे। और विदाउट वाइटल कंट्रोल्स कैप्टन और उनके को पायलट जो हैं, उन दोनों को एक दूसरे पे डिपेंड करना पड़ेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और वो भी जिस तरह से उन्होंने कभी भी पहले ये रियलाइज नहीं किया। The thought that a commercial airliner is going to find itself out of fuel with all the safeguards and all the redundancies is hard to fathom. This crew faced it together. Slats out and locked. The very design of the plane prevents it from dropping like a stone. Even without engines, the forward momentum of the plane gives it some lift. वो नीचे की तरफ जल्दी से गिर रहा है लेकिन फिर भी वो उड़ रहा है। Can you give me a landing speed, please? No engine, no flaps. Ideal approach speed is 170 knots. We're too fast. Yes. But the runway is very long. But at the end of the runway is a very steep cliff. Using the power available from the ram air turbine, Captain Piche जो है, he forces the plane to turn steeply, trying to burn up some air, some speed. The plane was almost on a 45-degree angle. I thought it was just gonna flip over and just nosedive straight down. Everybody, I need you to brace. Hang on. The tires have blown. After bursting 8 tires,
the plane is able to stop in the middle of the runway. जितने भी लोग सवार थे इस प्लेन में वो सब उनकी जान बच गई थी. He got that plane down safely, only blew out 8 of the 12 tires, and saved 300 people. He saved 300 people's lives. पीछे उनके को-पायलट डर्क डिजैगर ने एक प्लेन को उड़ाया है विदाउट फ्यूल, और जितनी हिस्ट्री में उनसे पहले किसी ने भी इतनी दूर तक नहीं उड़ाया था प्लेन विदाउट फ्यूल, और उनकी इस रिमार्केबल अचीवमेंट की खबर पूरे दुनिया में फैल गई थी. You don't have time really to think about anything else than taking care of the safety of your passenger, you know. That's your main goal, and since we didn't have any engine, the other main goal was to make the landing safely. So at that time, I guess the experience came in. इन्वेस्टिगेटर्स को ये बात पता लगती है कि जो लीक था सेकंड इंजन में वो तब शुरू हुआ था when it was replaced 5 days before the crash. We have to realize that there was a small mistake made in terms of changing the pump. We installed it, but then some pipes, so to speak, were needed to be connected to the pump, and there was a mismatch. The small mistake had crippled this highly engineered machine. और ये डिजाइन जिसका इस प्लेन का ऐसा था कि उसने जो है कुछ कंट्रोल पायलट्स के हाथ में दिया था जिससे कि वो इस डिजास्टर से दूर हट सके. At the Delta Connection Academy in Stanford, Florida, another student has collected his wings. After 14 months of training, he is one step closer to becoming a commercial pilot. We don't take everybody here at the Academy. We want people that are motivated, that want to come, that have a passion for flying. It's a career that you've got to want deep inside to accomplish. Otherwise, you'll never make it through. Accidents have forced the need for the pilots to better understand the relationship between the crew and the computer. The life of countless people depends on it. Pilots take the responsibility for their passengers very, very, very seriously. We're responsible from the time that passenger enters the airplane until they leave at the destination. The pilot's always the last line of defense. Automated systems make the flight more dependable and predictable, but it is the marriage between the crew and the computers which makes flying the most